Hello everyone, welcome to tutorial number 6. I have uploaded tutorial number 6 handout on the tutorials folder on LMS. So it will be better if you guys open it up so that you can look at the questions side by side. So the first question says that X is a random variable with the following PMF. I've written the PMF here. It has a probability of half at x equals to 0 when it's x equal to 1 with the probability of 1 over 3 and x equal to 2 with the probability of 1 over 6. So in case if we plot the PMF like that, so when x equals to we have 0, 1, right? So it has a probability of half. It assumes x equals to 0 with the probability of half. So it will be a line like that. And 1 over 3 with a probability of 1. So let's make it like that. And then 1 over 6 assumes 2 with a probability of 1 over 6. So the first question says that what is the probability of x assuming a value between 0 and 2? We know that x can only assume 3 values, 0, 1 and 2. So 0, 2 के बीच में आएगा 1. So इसकी probability हो जाएगी p of x equals to 1, which is 1 over 3, right? Moving on to the next question. It asks you that what is the probability of p when x is greater than 1.5. So x greater than 1.5 कब होता है जब x 2 होता है. So p x equals to 2. If you go up and check that, it's 1 over 6. So that is 1 over 6. Moving on, जो third part कह रहा है question का वो ये कह रहा है कि what is the probability that x equals to 1 given that x is less than 2, right? So x is less than 2 की probability क्या है? मतलब कि probability, so let me write down, probability of x is less than 2 is basically probability when x equals to 0 plus probability when x equals to 1. So that is, let's go up and check, it's 1 over 2 plus 1 over 3. So 1 over 2 plus 1 over 3 is equals to 5 over 6, right? So what probability when x equals to 1 हमें पता है, it is 1 over 3. And probability when x is less than 2 is 5 over 6 that we calculated. So probability of x is equals to 1 given that x is less than 2 will be 1 over, will definitely be 1 over 3. Okay, so I'll just write it here. 1 over 3 divided by 5 over 6. That's the answer for this. Moving on to D, part D. So it asks us to find the expected value of x. So आपको पता है कि expected value क्या होती है? The summation of x into probability when x equals to x, right? So 3 probabilities है हमारे पास when x equals to 0 with a probability of half, x equals to 1 over 3 with a probability of 1, x equals to 1 with a probability of 1 over 3, and x equals to 2 with a probability of 1 over 6. So I just simply multiply 0 with half, 1 into 1 over 3, plus 2 into 1 over 6. So that will be 0 into half, plus 1 into 1 over 3, plus 2 into 1 over 6. So if I just tabulate it, I get an answer which is equal to 2 over 3. Fairly simple. Then simple variance निकालनी है. Variance का formula हमने class में derive किया था, which was e x square minus ex whole square, right? So ex whole square, right? Okay, fine. So ex square निकालने के लिए simple, we have to multiply x square into px and add it. So 0 square, oops, sorry. So, okay. So 0 square into half, which is the probability when x equals to 0, plus 1 square into 1 over 3, the probability when x equals to 1, plus 2 square into 1 over 6. That's your ex square, which will amount up to, add up to 1, right? So 1 ये आ गया. ex हमने पहले निकाला था 2 over 3 था, तो simply हम formula लगाएंगे, which will be 1 ex square minus ex whole square. So 2 over 3 whole square. ठीक है? So that will give me an answer of 5 over 9. Okay, so now moving on to the question number 2. This one was fairly easy, just for your clarification कि PMF से किस तरह handle करना है. ठीक है? अब question number 2 पे आते हैं. So the question number 2, it says that 60% of people who purchase sports car are men. ठीक है? If 10 sports car owners are randomly selected, find the probability that part 1, exactly 7 are men, and part 2, no more than 7 are men. Okay, so now this seems like a simple binomial distribution because
एक तो हमें इसमें देयर आर टू आउटकम्स, ठीक है। या तो अगर आप एक बंदा को चूज करें जिसके पास स्पोर्ट्स कार है, वो मैन होगा या वो नहीं होगा। सो देयर इज लाइक ईदर सक्सेस और फेलियर। सो इससे लेट्स एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सक्सेस को हम डिफाइन करें सच दैट द पर्सन दैट यू सेलेक्ट इज मेल, इज अ मैन। So probability of success, which is small p, is 60%, which is 0.6, right? So probability of failure 1 minus 0.6 हो जाएगी, which will be 0.4, ठीक है। n जो है वो 10 हो जाएगा, ठीक है, because the total number of people who own sports car are who are selected are 10, right? And हमें part A बोल रहा है find the um, probability that x equals to 7। मतलब कि आप जो 10 स्पोर्ट्स कार ओनर्स को चूज करें उसमें से 7 मैन होंगे, राइट? सो दिस इज अ फेयरली सिंपल फॉर्मूला जो हम हर वक्त यूज करते हैं, व्हिच इज NCR, राइट? PR 1 minus P n minus R, ठीक है। so that's your formula for your binomial distribution। इसके अंदर हमने binomial इसलिए यूज किया because there was like two वो थे, there were two outcomes, one was a success and one was a failure। there could be two things happening, या मेल होगा या वो मेल नहीं होगा। so this is a characteristic binomial distribution, it's the type and this is the formula that we use, ठीक है। so n basically इसके अंदर 10 है, R जो है मैं यहाँ लिख देती हूँ, it will be 7 for part A, ठीक है। so I'll just put the formula in, so it will be 10 C7, P हमने कहा था 0.6 है, 0.67 power 7, and 1 minus P होगा 0.4 is to power 7 minus 10 minus 7 is 3। oops, sorry, okay, so the power is, it's not letting me make it, but I'll just do it like power, okay, sorry again, so I will just multiply it here, it will be 0.4 power 3, ठीक है। so if I just tabulate it simply, it will give me an answer, ठीक है, वो आप देख लेना। Part B कह रहा है what is the probability that no more than 7 are men, ठीक है, no more than 7 are men, मतलब के probability of x is less than equal to 7, मतलब के या तो 0 मैन हो सकते हैं या 1 मैन हो सकते हैं, 1 मैन हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 4 5 6 7, ठीक है, 10 में से इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो उसके दो तरीके हैं फाइंड करने के लिए। एक तो सिंपल ही होगा कि प्रोबेबिलिटी कि जब x इक्वल्स टू 0 होगा प्लस प्रोबेबिलिटी आप सबको ऐड करते हो, x इक्वल्स टू 1 होगा प्लस जब x इक्वल्स टू 2 होगा, जब 3 होगा, ऐड कर करके अंटिल जब x इक्वल्स टू 7 होगा, इन सबको आप ऐड कर दोगे, बट दिस विल बी अ वेरी टीडियस प्रोसेस। सो इसके लिए इजी प्रोसेस ये है कि हम क्या यूज करें, 1 माइनस जो हमें नहीं चाहिए, राइट, 1 माइनस जब probability of x is greater than 7, right? This is another way that you calculate, it's like calculating a complement. So you find out the probability of the complement, which will be कि जब number of males 8 होंगे, 9 होंगे या 10 होंगे, उसमें सिर्फ 3 terms है, so it's fairly easy to calculate, और उसको हम 1 में से subtract कर देंगे, so we'll get probability of x is less than equal to 7, ठीक है। so simply जो हम लोग approach यहाँ use करेंगे, we will be using like 1 minus probability when x is greater than 7। जब 10 लोगों को like choose किया, उसमें से जो number of males आ रहे हैं that are greater than 7, मतलब कि 1 minus probability when x equals to 8, when x equals to 9, plus when x equals to 10, ठीक है। so this is fairly simple। इसमें हम तीनों formulas, तीनों में हम लोग separately NCR वाला formula use कर सकते हो या आप recursion वाला use कर सकते हो जो सर ने हमें क्लास में सिखाया है। so that's up to you, entirely up to you। so I'll just use the normal binomial वाला formula because just to like recall it again, सही है। so 1 minus, ठीक है, so first है x equals to 8, so n is 10, 10c8, p is again 0.6 is to power 8, uh, 1 minus p is 0.4 is to power 2 because 10 minus 8 is 2, plus 10c9, 0.6 is to power 9, 0.4 is to power 10 minus 9 is 1, plus 10c10, 0.6 is to power 10, 0.4, 10 minus 10 0 होता है, 0, ठीक है। इन सबको आप ऐड करोगे, 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा, and you'll get the answer, ठीक है। दिस इज लाइक अ सिंपल binomial distribution का क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3।
सही है. Question number 3 says that there are about 147 students are enrolled in applied probability course this fall. Suppose that each student show up for the tutorial with the probability of P. ठीक है. So या तो बंदा show कर रहा है या वो नहीं कर रहा है. So probability of success हमारी जो है ना वो sort of P है, which is sort of rho के बराबर है यहाँ पर. Like this is symbol. ठीक है. If there are not more than 30 students in any tutorial, what can you say about rho? ठीक है. So what is 30 now? ठीक है, n तो समझ आ गया 147, which is the total number of students. ठीक है, that's fairly easy to find out and just grasp on the question. But what is 30? If there are not more than 30 students in any tutorial, मतलब the average number of students that are attending tutorial is no more than 30. मतलब जो expected value है, ठीक है, it is less than equal to 30. सही है. अब क्योंकि ये again it's a binomial distribution and you know how what the formula is to calculate the expected value. It is NP. That's what you derived in class. ठीक है. So हमें पता है कि NP जो है, which is the probability of success, is less than equal to 30. ठीक है. So P here is actually the rho. ठीक है. That's what they asked us to find. ठीक है. So N आपको पता है 147 है. Rho आपका ये है less than equal to 30. ठीक है. So rho is less than equal to 30 divided by 147. So your probability of success will be less than equal to 30 over 147. Expected, again I'll repeat, expected value हमने 30 इसीलिए because we're expecting, or the average number of students that are attending a tutorial is no more than 30. So that's your expected value. ठीक है? So this is how you do question number 3. Now moving on to question number 4. ठीक है? So question number 4 कह रहा है कि a certain chef in a restaurant overcooks meat 1 in every 20 dishes on average. ठीक है. Find the probability that the 10th dish he cooked is the first one with overcooked meat. So इधर question is pretty straightforward. सही है. In what sense? Because आपको directly बोल दिया है कि भाई इसकी probability कि भाई वो overcook कर रहा है meat को is 1/20. ठीक है. सो मैं P लिख देती हूँ छोटा सा, is 1/20. ठीक है. सो ये वो है. सही है. 1/20 है. अब वो कह रहा है कि what is the probability that the 10th dish he cooked, सही है, is the last one with the overcooked meat. ठीक है. So the 10th dish that he cooks is the last one with the overcooked meat. So this should ring a bell. ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? दिस इज अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. बिकॉज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो आपका nth ट्रायल होता है ना, उस पे सक्सेस होता है. इधर हमारा सक्सेस क्या है कि वो ओवरकुक कर रहा है मीट को. ठीक है. इट्स नॉट समथिंग गुड बट इट्स अ सक्सेस. ठीक है. सो 10th ट्रायल पे, मतलब 10th दफा जब आप उससे सैंपल निकालोगे तो वो ओवरकुक्ड मीट होगा. तो दिस इज अ क्लियर साइन दैट दिस इज अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है. इट्स फेयरली इजी इन द सेंस कि भाई आपको पता है कि भाई 9 टाइम्स जो है 10th पे आ रहा है ना, तो 9 टाइम्स जो है वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 - 1/20. मतलब फेलियर हो रहा है. ठीक है. बिकॉज या सक्सेस होता है या फेलियर होता है, बर्नौली. ठीक है. सो 1 माइनस सो बेसिकली 1 - 1/20 is to power 9 होगा. ठीक है. बिकॉज 9 दफा दिस फर्स्ट टाइम फेल हुआ एंड सेकंड टाइम फेल होगा, थर्ड टाइम फेल होगा, तो एंड होता है तो आप मल्टीप्लाई करते हो ना, तो रेज टू पावर 9 इसलिए इनटू लास्ट टाइम जो 10th टाइम है वो 1/20 की प्रोबेबिलिटी से सक्सेस हो गया. ठीक है. सो दिस विल गिव यू एन आंसर ऑफ 0.0315. ठीक है. ये मैंने इसलिए इस तरह से लिखा हुआ है बिकॉज it's fairly like अगर आप इसको if you look at intuition, it's just simply how you calculate probabilities. ठीक है. भाई फर्स्ट टाइम जो है 1 - 1/20 क्या होता है? बेसिकली इट्स 19/20, राइट? सो 19/20 हुआ फर्स्ट टाइम. ठीक है. मीट कुक था. फिर सेकंड टाइम भी 19/20 हुआ, मीट कुक था. थर्ड टाइम भी 19/20 हुआ, मीट कुक था. इस तरह से आप करते गए 9 टाइम्स 19/20 हो गया. और 10th टाइम वो कह रहे हैं कि भाई ओवर कुक था मीट, तो वो 1/20 था. सो दिस इज व्हाई आई पुट लाइक रेज इट पावर 9. ठीक है. ओके. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. Okay, so question number 5 is about, okay, let's just like go over it and we'll discuss it. ठीक है. So question 5 कह रहा है कि vehicles pass through on a busy road at an average rate of 300 per hour. ठीक है. So there's some sort of an average which is given, which is 300 per hour. Is the vehicles passing through on a busy road. ठीक है. Find the probability that none passes in a given minute. Second कहता है what is the expected number of vehicles passing in 2 minutes, and third कुछ और. अब if you look at this question, what do you figure out? Like किस तरह से figure out करें ये कौन सा distribution है?
ठीक है। वैसे जस्ट टू लेट यू नो इट्स अ Poisson distribution, I'm sorry, ठीक है, तो Poisson distribution why? बिकॉज आपको रेट दिया हुआ है, ठीक है, जब भी आपको रेट दिया होता है, ठीक है, वही रेट जब दिया होता है ना, लाइक योर एवरेज इज इन टर्म्स ऑफ टाइम पर मिनट पर आवर, तो इट्स लाइक अ सॉर्ट ऑफ अ हिंट कि ये Poisson distribution है, बिकॉज आप हमेशा Poisson distribution में आप यू ऑलवेज considering things that are happening in a particular time interval, ठीक है। अब इसमें है कि गाड़ियां आ रही है पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, इसमें एन ऑब्वियसली बहुत बड़ा होगा बिकॉज गाड़ियां तो बहुत ज्यादा आती हैं, राइट, और प्रोबेबिलिटी, ठीक है, सो एन बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा गाड़ियां आती हैं और रेट दिया हुआ है और किसी इंटरवल में कोई चीज हो रही है, तो इसीलिए इट्स अ वेरी क्लियर इंडिकेटर कि ये Poisson डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड एज यू वर टोल्ड इन क्लास दैट जब आपका एन बहुत बड़ा हो जाता है और पी आपकी बहुत छोटी जाती है, योर Poisson डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोचेज योर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सो उनकी फिर आप दोनों से निकालोगे सेम ही हो जाएगा, राइट। बट इन दिस केस हम Poisson ही यूज करेंगे, ठीक है। Poisson की जो सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला है, इट गोज लाइक पी x equals to k is equals to e minus lambda, ठीक है, lambda is to power k over k factorial, ठीक है। सो इधर lambda क्या है, lambda is your average, ठीक है, rate और average number of cars per unit time, like कितनी दफा बिजली जा रही है एक घंटे में, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है, इट्स योर एवरेज, योर लैम्डा इज योर एवरेज, ठीक है। सो योर एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है लैम्डा आपकी, ठीक है, इसकी और इसकी वेरिएंस भी लैम्डा ही होती है, ठीक है। अच्छा, सो इस केस में इफ यू लुक एट क्वेश्चन 1, कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन पासेस इन अ गिवन पॉइंट, मतलब कि p x इज इक्वल्स टू 0 निकालना है, सिंपली विल सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला। अच्छा, वन मोर थिंग दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन हियर, लैम्डा क्या है हमारा, लैम्डा हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 300 पर आवर, बिकॉज दैट्स योर एवरेज, 300 per hour, ठीक है। सो विच ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन पासेस इन अ गिवन मिनट, तो यहाँ मिनट से यहाँ आवर्स है, सो डेफिनेटली यू नीड अ कन्वर्जन, ठीक है। सो अगर 300 पर आवर गाड़ियां गुजर रही हैं तो पर मिनट कितनी जाएंगी, एक आवर में 60 मिनट्स होती हैं, ठीक है, और 3 घंटे जो है, सॉरी, 300 आपकी जा रही हैं एक घंटे में, तो एक मिनट में कितनी, 300 आपकी 60 मिनट्स में जा रही है, तो एक मिनट में आपकी जाएंगी 300 over 60, so let's just convert it first, so that will be 5, so 5 cars per minute, ठीक है, वो उस रोड से पास करिए, ठीक है। सो लैम्डा आप 5 लोगे, आप 300 नहीं लोगे यहाँ पर, बिकॉज आपका जो यूनिट्स का फर्क है, ठीक है। अब सिंपली वो कह रहा है पी एक्स इक्वल टू 0 निकालो, अब मैं सिंपल फॉर्मूला में सारा सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, ठीक है। So if I substitute in the formula, sorry, okay, so it will be e is to power minus 5, ठीक है, into 5 is to power k होता है, मतलब lambda is to power k होता है, तो 5 is to power 0 divided by 0 factorial which is 1, ठीक है। So this will give me an answer of e is to power minus 5, उसको आप कैलकुलेट कर लेना, जो भी आएगा 0.00678 आएगा, ठीक है। अब b पे आप आते हो, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है बी में, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग इन 2 मिनट्स, ठीक है, ओके, यू नो दैट पर मिनट 5 जा रही है, तो 2 मिनट में कितनी जाएंगी, 10 जाएंगी, ठीक है। सो इट्स फेयरली सिंपल, मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। अब पार्ट सी पे आ जाते हैं, पार्ट सी कह रहा है कि find the probability that the number of vehicles passing is equal to the expected value calculated in part B, सही है। सो नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग, वो कह रहा है कि 10 था एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि 10 व्हीकल्स पास होंगे, तो सिंपली फॉर्मूला आपने वो यूज करना है, पी एक्स इक्वल्स टू 10 पे करना है, सो दैट इज ई इज टू पावर माइनस लैम्डा, 5 ही होगा लैम्डा, ठीक है, बिकॉज लैम्डा तो चेंज नहीं हो रहा है, राइट, वो तो उन्होंने सिंपली उस बी से रिलेट किया, दैट्स कंप्लीटली अनरिलेटेड, ठीक है। सो ओ सॉरी, सो फॉर पार्ट सी what we're supposed to do is that find the probability, okay, so again I'm sorry, just a bit, so probability that x equals to 10 अगर होगा, ठीक है, question says, I'll just repeat the question, find the probability number of vehicles passing is equal to the expected value calculated in B, ठीक है। so it's gonna be e to power minus 5, ठीक है, solution में -10 लिखा हुआ है, which doesn't make any sense, ठीक है, into, ठीक है, oh sorry,
into okay, so again moving on to part C. पार्ट सी जो है वो आपको कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग इज इक्वल टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेटेड इन पार्ट बी। सही है। इधर वन क्लैरिफिकेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू इसके अंदर जो टाइम फ्रेम है वो 2 मिनट्स की बात हो रही है, दैट्स व्हाई आई गॉट कंफ्यूज अ लिटिल। ठीक है, 2 मिनट्स की बात हो रही है, तो 2 मिनट्स के लिए आपका जो लैम्डा निकाला था वो आपने 10 निकाला था, सिंपली नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इन द फॉर्मूला दैट वी फिगर आउट फॉर पोइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो e इज टू पावर -10 हो जाएगा, बिकॉज लैम्डा या -10 है, बिकॉज अब 2 मिनट्स के टाइम फ्रेम की बात करें। इट्स नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, आई नो इट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग देयर, बट आप ये करोगे। ठीक है, 10 इज टू पावर 10 होगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ x इक्वल्स टू 10 है, बिकॉज दे आर सेइंग दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू की जितनी ही अगर कार्स पास होंगी, डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल। So the answer that will give is point, sorry, 0.125. Oops. 1 1. ठीक है, I'm sorry for my bad handwriting. Anyway, now let's moving on to question 6. ठीक है, question 6 कह रहा है कि in a production process the probability of manufacturing a defective rear view mirror for a car is 0.075. Assume that the quality status of any rear view mirror produced in this process is independent of the status of any other rear view mirror. A quality control inspector is to examine rear view mirrors one at a time to obtain 3 defective mirrors. Determine the probability that the third defective mirror is the 10th mirror examined. ठीक है, so वो कह रहा है determine the probability that the third effective mirror is the 10th mirror examined. सही है। सो इससे पहले जो हमने किया था वो क्या कह रहा था कि भाई 10th पे ही ओवरकुक्ड होगा मी, मतलब कि जो आपको सक्सेस आएगा वो इस ट्रायल पे आएगा, वो लास्ट ट्रायल पे आएगा। इधर क्या कह रहा है कि जो हमारा सक्सेस है, व्हाट इज द सक्सेस हियर, लेट्स डिफाइन सक्सेस हियर एज द probability that the manufacturing a defective rear view mirror is your success। ठीक है, जिसकी probability मैं लिख देती हूँ, P is basically, so I'll write 6 here, sorry, question 6। ठीक है, so P is equals to 0.075। सही है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। सक्सेस क्या है कि भाई आपने एक डिफेक्टिव रियर व्यू मिरर सॉरी आपने मैन्युफैक्चर कर लिया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द थर्ड डिफेक्टिव मिरर इज द 10th मिरर एग्जाम। ठीक है, इट्स नॉट लाइक द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर हमारा लास्ट ही सक्सेस पे था, मतलब कि लास्ट ही डिफेक्टिव होता है। यहाँ नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि जो थर्ड होगा, जो थर्ड जो आपका सक्सेस होगा वो एक्चुअली वो आपका 10th मिरर एग्जामिन पे आएगा। ठीक है, so this is a proper negative a proper negative binomial। ठीक है, so उसका फॉर्मूला हमने क्लास में किया था, it was n-1 r-1 and choose n-1 choose r-1 p r-1 1 minus p n-1 minus r-1 into p। ठीक है, ये दोनों p's को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा n-1 r-1 p r 1 minus p n-1 minus r-1। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला है। अब देख लेते हैं n क्या है। n इसके अंदर हमारा है 10। ठीक है, बिकॉज जो हम 10th टोटल नंबर ऑफ मिरर्स उस वक्त तक एग्जामिन कर लिए होंगे वो 10 होंगे, सो n आपका 10 आ जाएगा। और r आपका क्या है कि हमारा सक्सेस कौन से नंबर का सक्सेस होगा, थर्ड सक्सेस होना चाहिए, सो r आपका 3 है। So putting this into the formula, so that will give me n-1 होता है 9। ठीक है, r-1 होता है 2। ठीक है, मतलब के 3-1। p आपका क्या है, 0.075 निकाला, मतलब हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.075। p का पावर होता है r। r क्या यहाँ पर है, r यहाँ पर है 3। ठीक है, सही है। फिर 1 माइनस p क्या है, 1 माइनस 0.075, सो 1 माइनस 0.075। इसका पावर क्या होगा, n-1। n-1 क्या होता है 9, 10 माइनस 1। ठीक है, माइनस r-1। r-1 क्या होता है 3 minus 1, which is 2, so 9 minus 2 is 7. So basically, this is your answer. This is the probability that the third defective mirror is the 10th mirror examined. So in all, I know a lot of you guys face an issue with just determining if which distribution should we use. सही है, mostly question में बहुत clear hints होती हैं कि कौन सा distribution use करना चाहिए. So the more you practice, the better you will be able to grasp quickly कि यही है, because certain things के लिए, जैसे for geometry के लिए आपका success last trial पे आना चाहिए, इसके लिए आपका कुछ success पहले भी आ गए होते हैं,
अब वो कह रहा है कि भाई 10th ट्रायल पे जो है वो थर्ड सक्सेस होना चाहिए, सो इट्स नॉट द फर्स्ट सक्सेस, राइट? तो ज्योमेट्रिक और नेगेटिव बायनोमियल ये फर्क है। बायनोमियल पोजॉन में थोड़ा डिफरेंस ये होता है, बट पोजॉन बेसिकली जब होता है जब आप इंटरवल से डील करते हो, ठीक है? अभी आप एक्सपोनेंशियल भी पढ़ोगे, सॉर्ट ऑफ सिमिलर आल्सो, और वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बट बायनॉमिनल क्या होता है कि भाई या तो हो रहा है या तो नहीं हो रहा है, ठीक है? और ये सक्सेस है, ये फेलियर है, ठीक है? सो डोंट वरी टू मच, इफ यू प्रैक्टिस देन यू विल गेट टू नो इट। ओके, नाउ आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग। ओके।